Good morning, children. Today is my fourth video of life processes. So the next topic we are going to study is about respiration. Now, what is respiration? It is the process which involves exchange of gases. That is, we know that generally the animals, they take in oxygen and they release carbon dioxide. This oxygen is then mixed up with the blood, carried by the blood to all the cells of the body, so that whatever food is in the cell, it gets oxidized to produce energy. So the basic concept is to obtain energy. ये जो respiration है, ये breathing जैसा ही लगता है हमें, मगर थोड़ा सा difference है दोनों के बीच में. Breathing एक physical process है और रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग, और ब्रीथिंग तो बस एक्सचेंज, डिफ्यूशन से एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट है. ओके, ब्रीथिंग में सिंपली एक्सचेंज होना है. ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है. प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ते हैं, है ना. वो भी ब्रीथिंग का पार्ट होता है. और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन अंदर गया है ऑर्गेनिज्म के, वो सेल्स में पहुंचता है और उसको यूटिलाइज करके, उसको इस्तेमाल करके खाने को ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि एनर्जी बने. ये रेस्पिरेशन का कंसेप्ट है. अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है. ओके, और ब्रीथिंग में यही एनर्जी खर्च होती है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में. ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है. तो ये खास डिफरेंस है दोनों के बीच में, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में. ओके, आगे हम देखते हैं. रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक एरोबिक होता है और एक एनेरोबिक होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है. कंप्लीटली इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. जो फूड होता है उसका प्रॉपर एक ऑक्सीडेशन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं और एनर्जी साथ में रिलीज होती है. ठीक है, और एरोबिक में जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफ़ी सारी होती है. हम 38 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं एटीपी के, जो यहाँ पर रिलीज होते हैं. एनेरोबिक में क्या होता है? एनेरोबिक में ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है या ऑक्सीजन की कमी में होता है, जिसको हम लैक बोलते हैं. हम इवन इसको लैक बोलते हैं. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसमें. ठीक है, और जो एंड प्रोडक्ट है या तो एथेनॉल या लैक्टिक एसिड होता है और थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है, जितने की 2 एटीपी. चलो हम देखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है. आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट में दिया हुआ है, वेरियस पाथवेज आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज? ग्लूकोज सबसे पहले किसी भी सेल में, चाहे वो ह्यूमन का सेल हो, चाहे वो किसी प्लांट का सेल हो, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है, किसी भी सेल में ग्लूकोज मेन हमारा ऑक्सीडेशन का जो है रिएक्टेंट है, जिसको हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं या करते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पाइरुवेट में. ये एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है पाइरुवेट. इसको पाइरुविक एसिड भी कहा जाता है. तो glucose is broken down to pyruvate in the cytoplasm. It's very important to remember. And little energy is produced in this. 10 ATPs are produced and then 2 are consumed. This process is called glycolysis. Glucose lysis breaking down. Okay, this much is a common reaction between aerobic and anaerobic respiration. दोनों का कॉमन ये है, तो ये कॉमन प्रोडक्ट है दोनों का, और ये होता है साइटोप्लाज्म में सेल के. फिर ये पाइरुवेट जो है, इट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉट एनर्जी. इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस is further broken down into carbon dioxide, water and energy. I told this is the complete oxidation. These are the end products. Carbon dioxide, naturally, if it is produced in any of our cells, if it is nahi, it is produced in all cells. It is removed out when we exhale out gases from the nostrils. That's carbon dioxide. Then water it becomes a part of the cytoplasm. So none of them are harmful. Both of them have some
method to be removed out or utilized. And then the end product is again energy also with 38 ATPs, as I told you. Now the pyruvate, otherwise if you take in the case of the muscles of higher animals, in muscles of higher animals including man, then the end product is lactic acid energy. Okay, and what is lactic acid doing here actually? Why is it produced? Because of lack of oxygen. Whenever in the muscles we are doing some strenuous activity, if you are running a long distance or you're cycling to a few kilometers, maybe that you get tired, you don't have a practice, then what happens is oxygen supply is not to that level, up to the level you are utilizing the glucose or oxidizing the glucose. So in that case what happens, lactic acid is produced. It is a painful product rather. Okay, it is painful product, and you can even write it as fatigue. It creates fatigue. Okay? So, and very little energy is produced, only 2 ATPs. On the other hand, in lower organisms, like in case of you can tell fungus like yeast or in certain bacteria, okay, what happens is in absence of oxygen, here totally the oxygen is absent because they don't utilize oxygen, they don't take up oxygen, and hence what happens in anaerobic condition, in absence of oxygen, ethanol is formed as a byproduct along with carbon dioxide and 2 molecules of ATP. So this is how in different organisms, in different conditions, glucose is broken down. In the human beings, normally, or in plants, normally when aerobic respiration occurs, it occurs in the mitochondria. This is to be noticed. It occurs in the mitochondria of the cell. Okay, this is about aerobic respiration. So children, thanks for watching. I hope you have understood whatever I have taught you today. You can just make your notes, okay, and like the video. You can even note down whatever you need to note down. Ask any doubt in the comment section. Share it with your friends, subscribe, and even if you have not subscribed, or if you have not ring the bell, you can press the bell icon so that you can get my whatever notations I am updating. You can get them very soon. Okay, take care.